Computer privacy. Yes, sir. सर ये मुझे भी रिकॉर्डिंग अलाउ कर दें। मैं कर रहा हूँ ना, करके जब अपलोड कर देनी है तो फिर आपने रिकॉर्डिंग अलाउ, आपने क्या करनी है, एक बंदे कर रहा है। तो कुछ बच्चे फिर मैसेज करते हैं ना, उनको जल्दी चाहिए होती है। हाँ, जो क्लास में नहीं आते उन्हें जल्दी चाहिए होती है ना। यस सर। चलें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क्स, आइडेंटिफाई वेज टू सेफगार्ड अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस, worms एंड ट्रोजन हॉर्सेस। Discuss techniques to prevent unauthorized computer access and use. Identify safeguards against hardware theft and vandalism. Identify safeguards that protect against internet security risks. ये इसके objectives नहीं हैं अभी lecture के. Recognize issues related to information accuracy, rights and conduct. Discuss issues surrounding information privacy. Discuss ways to prevent health-related disorders and injuries due to computer use. अच्छा, computer privacy क्या है? Everyone takes privacy in normal life for granted. Computer also have privacy. जैसे हम इंडिविजुअली प्राइवेसी चाहते हैं, इस तरह से कंप्यूटर की भी एक प्राइवेसी होती है, और हर किसी का इंडिविजुअल जो सिस्टम है वो प्राइवेसी उसको चाहिए होती है. When dealing with computers, security and privacy are almost synonyms. तो जब हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की बात करते हैं तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी तकरीबन एक ही बात है. प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग हैक, कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने का तरीकाकार ये. द वेज ऑफ कंप्यूटर प्राइवेसी, पासवर्ड लगाना, एन्क्रिप्शन, ईमेल प्राइवेसी, password. What is password? Not just to protect the computer, but to make sure that the computer issues by authorized worker are user only. तो हमारी ऑथराइजेशन के जो जिसने यूज करना है उसी को ही पासवर्ड वही लगाए और उसी को ही पता हो. Encryption. With public key encryption, there are two keys, one public and the other is private. पब्लिक की सबको ही पता होता है कि ये की है, और प्राइवेट जो है वो स्पेसिफाइड लोगों को, ये स्पेसिफिक जो पर्सन है उसको पता होता है. द पब्लिक की नीड्स टू बी नोन. टू सेंड ए मैसेज टू ए फ्रेंड, यू यूजेस his public key to encrypt the message. Your friend then uses his private key to decode the message after receiving it. Email privacy में क्या है? When you send a message by email, the message is broken into packets and the packets are sent out over the internet. Definitely आपको पता है कि हम streams डाटा जब send करते हैं तो streams बनती हैं, और different streams के chunks या packets होते हैं. वो 0101 की फाइनली बाइनरी स्ट्रीम जो क्रिएट होती है, तो जो भी मैसेज सेंड करते हैं वो ब्रोकन इनटू डिफरेंट पीसेस, और वो पीसेस मिलकर एक पैकेट या एक चंक बनाते हैं. तो डाटा इस तरह से सेंड होता है, और दूसरी तरफ जाकर वो डिक्रिप्ट हो जाता है. द नंबर ऑफ पैकेट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मैसेज. ईच मैसेज हैज द इंटरनेट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. This means there may be some places between the packets could be intercepted and examined. What is a computer security risk? Action that causes loss of or damage to computer system. अब कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो यही है कि कंप्यूटर डैमेज होने का जो खदशा होता है या डैमेज हो जाए तो वो सिक्योरिटी रिस्क कहलाता है. वो किस तरह से हो सकता है? सिस्टम फेलियर हो सकता है, कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस वगैरह जो वायरसेस हैं वो अटैक कर दें, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए एंड यूज हो जाए, कोई दूसरा बंदा अनऑथराइज्ड उसको एक्सेस कर ले और यूज कर ले. हार्डवेयर थेफ्ट, आपका सिस्टम या आपका मोबाइल या लैपटॉप चोरी हो जाए.
सॉफ्टवेयर थेफ्ट, आपका सॉफ्टवेयर चोरी हो जाए। इंफॉर्मेशन थेफ्ट, जो इंफॉर्मेशन है आपने जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाए, जैसे कि अक्सर असाइनमेंट चोरी हो जाती होगी आप लोगों की। What are viruses, worms, and Trojan horses? Virus is a potentially damaging computer program, can spread and damage files. और ये फैल जाता है और फैल कर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डैमेज करता है डेफिनेटली। वॉर्म्स कॉपीज इटसेल्फ रिपीटेडली, ये अपने आप को ये कॉपीज करता रहता है बार 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 बार, यूजिंग अप रिसोर्सेज एंड पॉसिबली शटिंग डाउन कंप्यूटर और नेटवर्क, और उसको इतना भर देता है बार बार कॉपी कर करके, कॉपी कॉपी कर करके कि वो सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली बंद हो जाता है। पेलोड क्या है? डिस्ट्रक्टिव इवेंट दैट इज डिलीवर्ड व्हेन यू ओपन फाइल, रन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और बूट कंप्यूटर विद इन्फेक्टेड डिस्क इन डिस्क ड्राइव। जब आप इन्फेक्टेड डिस्क या डिस्क ड्राइव ये कंप्यूटर इन्फेक्टेड प्रोग्राम के थ्रू चलाते हो, ये कंप्यूटर बूट होता है, तो ये पेलोड है। ट्रोजन हॉर्स हाइड्स विद इन और लुक्स लाइक legitimate program until triggered, does not replicate itself on other computers. How can a virus spread through an email message? Step one, crypt programmers create a virus program. They hide the virus in a Word document and attach the Word document to an email message. तो हमें भी बहुत दफ़ा आती हैं ऐसे ईमेल्स, बात कर खोल लें तो प्रॉब्लम हो जाती है। They use the internet to send the email message to thousands of users around the world. अब इंटरनेट ऐसी फैसिलिटी है जिसके जरिए आप हजारों लोगों को एक ही टाइम पर अपना वायरस फैला सकते हैं। Step 3A. Some users open the attachment and their computers become infected with the virus. जैसे ही हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है, सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। स्टेप 3B में क्या है? अदर यूजर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द सेंडर ऑफ द ईमेल मैसेज। अब उस ईमेल मैसेज जिसने भेजी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं हम कर सकते। These users do not open the email message. Instead, they delete the email message. ये ओपन नहीं कर सकते और इसको अगर आप डिलीट कर सकते हैं। दी यूजर्स कंप्यूटर्स आर नॉट इन्फेक्टेड विद द वायरसेस, जो डिलीट कर दें। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम मैक्रो वायरसेस? मैक्रो वायरसेस से कैसे प्रोटेक्ट करें सिस्टम को? Set macro security level in applications that allow you to write macros. Add medium security level warning displays that document contains macro. Macros are instructions saved in an application such as word processing or spreadsheet program. What is an antivirus program? जो वायरस को रोके, so identifies and removes computer viruses. Most also protect against worms and Trojan horses. Popular antivirus programs are AVG antivirus, Command antivirus, McAfee virus scan, Norton antivirus, Trend micro PC, Sidin. What is a virus signature? Specific pattern of virus code, also called virus definition. वो उसका कुछ specific pattern बना देते हैं virus का। Antivirus programs look for virus signatures. The virus signature is like a fingerprint in that it can be used to detect and identify specific viruses. वायरस सिग्नेचर जो है वो फिंगरप्रिंट की तरह होता है जिसको हम स्पेसिफिक वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजेस द वायरस सिग्नेचर टू स्कैन फॉर द प्रेजेंस ऑफ malicious कोड। उसके प्रेजेंस को जानने के लिए वायरस की तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इस वायरस सिग्नेचर को यूज करते हैं डिफरेंट उसको आइडेंटिफाई करने।
How does an antivirus program protect a program file? आप program file को कैसे protect करें? Records information about programs such as file size and creation date. Records information about program such as, अच्छा उसकी information को record कर रखें, और जैसे कि file size और creation data जो है इसका, उसकी date, creation date उसकी जो है, uses information to detect if virus interfaces with file, attempts to remove any detected virus, उसको remove करें, contains infected files that it cannot remove, उनको कॉर्नर कर दें, फिक्स कर दें जो कि रिमूव नहीं हो सकते, कीप फाइल इन सेपरेट एरिया ऑफ हार्ड डिस्क, और इसको हार्ड डिस्क के किस सेपरेट एरिया में रखें ताकि वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो. व्हाट इज अ रिकवरी डिस्क? रिमूवेबल disk that contains unaffected copy of key operating system commands that enables the computer to restart, also called a rescue disk. Once computer restarts, antivirus program can attempt to repair damaged files. जैसे ही हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो एंटीवायरस डैमेज्ड फाइल्स को रिपेयर करना शुरू कर देता है. What are some tips for preventing virus worms and Trojan horse infections? अब इसको कैसे बचा जाए, टिप्स क्या हैं? Set the macro security in program so you can enable or disable macros. Install an antivirus program on all of your computers. Never open an email attachment unless you are expecting it and it is from a trusted source. If the antivirus program flags an email attachment as infected, delete the attachment immediately. अगर वो attachment के साथ है तो उस email को फौरन delete कर दें. Check all downloaded programs for viruses, worms और Trojan horses. इनको check करें, proper programs को. Backup your files regularly. Files का backup regularly रखें. अच्छा, what is unauthorized access and how is it achieved? The use of a computer and network without permission is called unauthorization. Authorized access कहलाती है. Hackers typically break into computer by connecting it to it and then logging in as a legitimate user. तो वो ऐसे लगता है जैसे वो खुद ही यूजर है, तो वो हैकर्स इसको हैक करके यूज करना शुरू कर देते हैं. Hacker or crackers is someone who tries to access the computer or network illegally. ये हैकर या क्रैकर ऐसे लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज फायरवॉल? Security system consisting of hardware and the software that prevents unauthorized network access. Unauthorized network access को बचाने के लिए फायरवॉल यूज करते हैं. Personal firewall क्या है? Program that protects personal computer and its data from unauthorized intrusions, monitors transmissions to and from computer, informs you of attempted intrusion. Personal firewall softwares कौन से हैं? Black Ice PC protection, McAfee firewall, Norton personal firewall, Cygate personal firewall, Tiny personal firewall, and Zone Alarm. What are other ways to protect your personal computer? Disable file and printer sharing on internet connection. उनको फाइल्स को डिसेबल कर दें जो कि शेयर हो रही हैं. यूज ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस, वेबसाइट दैट evaluates computer to check for web and email vulnerabilities. How can companies protect against hackers? कंपनीज किस तरह से हैकर्स से अपनी जान छुड़ाती हैं या बचते हैं? Intrusion detection system analyzes network traffic, assesses system vulnerabilities and identifies intrusions and suspicious behavior. तो ये ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को रोकने के लिए, उनको उसको असेस करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू आता है तो उसको फौरन आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. Access control defines who can access computer and what actions they can take.
ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड्स एक्सेस अटेम्प्ट्स, ये रिकॉर्ड करे एक्सेस अटेम्प्ट्स की रिकॉर्ड है। व्हाट इज द यूजर नेम, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज यूजर। पासवर्ड हमारा क्या है, वो प्राइवेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद द यूजर नेम दैट अलाउज एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। आपका यूजर नेम क्या है जो आपने रखा है, जो आप बताता है कि आप इसके यूजर हैं, और पासवर्ड भी जो आपने रखा है, और वो बताता है कि आपने ये आपका पासवर्ड है, और डिफरेंट नंबर्स कैरेक्टर्स के ऊपर पेश कर सकता है। हाउ कैन यू मेक योर पासवर्ड मोर सिक्योर, लॉन्गर पासवर्ड्स प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। थोड़ा बड़ा पासवर्ड जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक हो या स्पेशल करेक्टर्स कुछ ऐसे ऐड करें तो वो ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, तो ये उसने नंबर ऑफ करेक्टर्स और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात की है। वो इतने ह्यूमन 3 मिनट्स में कर सकता है, कंप्यूटर इतने सेकंड्स में कर सकता है। तो जो 10 सालों में बंदा ह्यूमन जो है वो कॉम्बिनेशंस को डिटेक्ट करेगा, कंप्यूटर उसको 30 सेकंड में डिटेक्ट कर लेता है। तो जो ह्यूमन 3 महीने में डिटेक्ट करता है पैटर्न्स को, कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर ह्यूमन 580 मिलियन ईयर्स में डिटेक्ट करे तो सिस्टम उसको 59 ईयर्स में डिटेक्ट कर लेता है। तो स्ट्रॉन्गर पासवर्ड होना चाहिए, तो सिस्टम के लिए कोई मसला नहीं है, वो आप स्पीड उसके हिसाब से आपने देख लिया। What is a possessed object, item that you must carry to gain access to computer या facility, often used with numeric password card, personal identification number, PIN, PIN। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, authenticates person's identity using personal characteristic, fingerprint, hand geometry, voice signature and iris। हार्डवेयर थेफ्ट एंड हार्डवेयर वैंडलिज्म क्या है, हार्डवेयर थेफ्ट इज एक्ट ऑफ स्टीलिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, इसमें तारें, इसके कनेक्टर्स, इसका कंप्यूटर, इस लैपटॉप, पीडीएस आपके चोरी हो जाएं। ठीक है, तो हार्डवेयर वैंडलिज्म क्या है, इज एक्ट ऑफ डिफेसिंग और डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, उसको सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिफेस कर दिया जाए। सॉफ्टवेयर थेफ्ट क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उसको चोरी कर लिया जाए, उसका पासवर्ड चोरी कर लिया जाए, उसकी प्राइवेसी खत्म कर दी जाए। ये लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है, और राइट टू यूज सॉफ्टवेयर के हमने जो है सिंगल यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट अलाउज यूजर टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन वन कंप्यूटर, मेकअप make backup copy and sell software after removing from computer। What are some other safeguards against software theft? तो product activation आप करें, allow user to input product identification number online or by phone and receive unique installations identification number। BSA Business Software Alliance क्या promotes better understanding of software privacy problems। What is encryption? Safeguard against information theft, process of converting plain text readable data into cipher text, unreadable data जो होता है। तो इंक्रिप्शन की क्या है, जो सीक्रेट की होती है, जो फार्मूला जिसके तहत इसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्टेड फाइल इस तरह से नजर आती है, इसका लगता है कि कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये डिक्रिप्ट होती है तो ये मीनिंगफुल हो जाती है, हमें उसी तरह से मैसेज जिस तरह से सेंड हुआ है उसी तरह से रिसीव होता है। सिस्टम फेलियर क्या है, प्रोलॉन्ग मेल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सिस्टम आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, डाटा करप्ट हो जाए, नॉइज आ जाए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएं। ठीक है, तो ये सिस्टम फेलियर है। बैकअप, आप डुप्लीकेट ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम्स या डिस्क, इसको बैकअप कहेंगे। तो सिलेक्टिव बैकअप या फुल बैकअप आप रख सकते हैं। 3 जनरेशन बैकअप प्रिजर्व्स 3 कॉपीज ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स। तो बैकअप रखना चाहिए सिस्टम का, ताकि उसके फिर सिस्टम क्रैश या फेलियर की सूरत में आपके पास बैकअप होना चाहिए। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या है,
also called DOS attack. Hacker uses unsuspecting computer called zombie to execute attack on other systems. Zombies को use करते हैं. DDoS attacks जो हैं वो भी use होते हैं. CERTC जिसको हम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं, तो ये असिस्ट करते हैं इस हवाले से. How do web browsers provide secure data transmission? So many web browsers use encryption. Secure site is website that uses encryption to store data. A digital certificate is notice that guarantees website is legitimate. ये genuine है. Information privacy जिसमें हम अपने information को की प्राइवेसी हम चाहते हैं, हमारा नाम, हमारा डाटा, हमारा पासवर्ड, हमारे डिफरेंट क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सेव रहें और वो उनकी सिक्योरिटी हमें चाहिए. तो पर्सनल सिक्योरिटी भी चाहिए, फाइल्स की, ठीक है, डाटा की. अच्छा, इसमें क्लियर योर हिस्ट्री फाइल व्हेन यू आर फिनिश्ड ब्राउजिंग. अपनी हिस्ट्री फाइल को ख़त्म कर दें ताकि किसी और के हाथ न लगे. इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स दैट यू डू नॉट वांट देम इन डिस्ट्रीब्यूट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. So set up a free email account. Use this email address for merchant forms. Do not reply to spam for any reason. ये बचने के लिए कि आप उससे बचते कैसे हैं, ठीक है. Turn off files. Limit the amount of information. Install a personal firewall install करें. अच्छा, what is an electronic profile? Data collected when you fill out form on web. Merchants sell your electronic profile. Often you can specify whether you want personal information distributed. Cookies क्या है? Small file on your computer that contains data about you, user preferences, how regularly you visit websites, interests and browsing habits. तो उसको पता है कि आपकी आदत क्या है, आप कौन सी साइट्स खोलते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप चाहते क्या हैं. Some websites sell or trade information stored in your cookies. Set browser to accept cookies. Prompt you to accept cookies या disable cookies. बाज़ का सिस्टम कहता है आपको कि जी कुकीज़ को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. ठीक है, जब आपने वेबसाइट खोलनी है या वेब एड्रेस लेना है तो आप वो ब्राउज़र ओपन होता है तो कुकीज़ की परमिशन मांगता है. आपको बाज़ का कुकीज़ को इनेबल करना पड़ता है, बाज़ का डिसेबल करना पड़ता है. कुकी ये कुकी की इसकी एग्जांपल है कुकी मैनेजर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट selectively blocks cookies, जो कि ब्लॉक कर देते हैं. अच्छा, स्पाईवेयर और स्पैमवेयर क्या है? Spyware and spam. So spyware is program placed on computer without user's knowledge. Security collects information about user. A spam is unsolicited email message sent to many recipients. आप स्पैम्स को कैसे करें, ईमेल फिल्टर करें, कैसे कंट्रोल करें? ईमेल फिल्टरिंग करें, एंटी स्पैम प्रोग्राम लगाएं. प्राइवेसी लॉज हैव बीन इनेक्टेड. तो ये लॉज हैं 1992 में, 94, 96, 7, 8, 2001 में लॉज बने कि किस तरह से प्राइवेसी जो है वो उसको मेंटेन करना है. अब कंटेंट फिल्टरिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल. तो इसके लिए ये इंटरनेट कंटेंट रेटिंग एसोसिएशन है जो कि प्रोवाइड्स रेटिंग सिस्टम ऑफ वेब कंटेंट. वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू स्पेसिफाइड. तो ये CVS और ये RSI CTS, ये व्हाट आर सम हेल्थ कंसर्न्स ऑफ कंप्यूटर यूज. आई एंड विजन प्रॉब्लम के लिए आपके फोर आर्म टू palm, उसके लिए रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी के लिए एटसेट्रा. इंफॉर्मेशन of tendon due to repeated motion when computer can use entire social life. So ये एडिक्शन कंप्यूटर एडिक्शन के वजह से कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आपकी इंटरनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. आप डिफरेंट बीमार हो सकते हैं, आंखों का मसला हो सकता है, पेन, कमर, हेडेक का मसला हो सकता है. आप मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स? मैंने पूछा ही नहीं आज. यस सर. जी सर, साथ ही. यस सर. सारा जी टाइम सर, क्लास में.
सारा टाइम तो आप खा गए अटेंडेंस लगाने में, तो अपना लेक्चर में फिर ऐसे ही होगा ना। अब ये बता रहे हैं कि आपने किस तरह से बचना है, तो आप एक्सरसाइज हैंड आर्म्स करें, यूज रिस्ट रेस्ट, बाजुओं को रेस्ट दें, ठीक है, बैठें, बैठने का स्टाइल बेहतर बनाएं ताकि आप कंप्यूटर पर थके ना, हेडेक ना हो। हर 10 से 15 मिनट बाद टेक एन आई ब्रेक, लुक इनटू द डिस्टेंस, फोकस आपका 20 से 30 सेकंड ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। होल्ड योर आइज इन अ कंप्यूटर सर्कल, क्लोज योर आइज एंड रेस्ट देम फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। हम तो आंखें नहीं बंद करते कंप्यूटर चलता हो तो। ब्लिंक योर आइज एवरी 5 सेकेंड्स, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन। लाइट को एडजस्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर कोई इशू आता है तो। यूज लार्ज फॉन्ट्स, छोटा साइज, छोटी स्क्रीन यूज करने से सर में दर्द और आंखों का वीएन का प्रॉब्लम हो सकता है। एर्गोनॉमिक्स क्या है? अप्लाइड साइंस डिवोटेड टू कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। कीबोर्ड हाइट, मतलब एर्गोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि इंसान करके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसकी यूजेबिलिटी या यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। मींस कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो कुर्सी या टेबल उतना ऊंचा होना चाहिए, अगर आपकी हाइट छोटी है तो कुर्सी और टेबल उतना थोड़ा सा नीचा होना चाहिए। कीबोर्ड रखने की जगह भी वैसे एडजस्ट होनी चाहिए। एल्बोज एट 90 डिग्रीज एंड आर्म्स एंड हैंड्स पैरेलल टू द फ्लोर, तो उसकी डिग्री के हिसाब से जहाँ एडजस्ट होता है आपके एल्बो 90 डिग्री उसने बताया। एडजस्टेबल बैक रेस्ट, एडजस्टेबल सीट, फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो एडजस्टेबल हाइट चेयर विद 5 लेग्स फॉर स्टेबिलिटी, तो एडजस्टेबल चेयर होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकें। तो हमारे यहाँ ये है कि वही चेयर छोटा भाई इस्तेमाल करता है, वही बड़ा करता है, वही मोटा बंदा, वही पतला बंदा, वही लंबा, वही छोटा, तो एक ही तरह का टेबल एक ही चेयर पे, तो उसमें से किसी ना किसी को प्रॉब्लम जरूर हो रही होती है जो उसमें फिट नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है? जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी कम करनी है, जिसमें इन्वायरमेंटल वेस्ट वाइल यूजिंग कंप्यूटर उससे बचना है, ठीक है। एनर्जी स्टार प्रोग्राम चल रहा है। डू नॉट लीव द कंप्यूटर रनिंग ओवरनाइट, टर्न ऑफ द मॉनिटर, प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस। तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग है, तो रिसोर्सेज को बचाना है। यूज पेपरलेस मेथड्स टू कम्युनिकेट, आप रिसाइकल द पेजेस को बार बार यूज करें। बाय रिसाइकल पेपर, रिसाइकल टोनर कैटरेजेस, रिसाइकल ओल्ड कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, टेलीकम्यूट, सेव गैस। पोटेंशियल कंप्यूटर रिस्क क्या है? ठीक है, बिजनेस के हवाले से हो सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क को सेफ गार्ड करना चाहिए। एथिकल इशूज सराउंडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एथिकल इशूज क्रिएट हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये आपको ऑनलाइन बात करनी है तो वो प्रॉपर करें, ठीक है, किसी के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करें। हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ज़्यादा बैठने से, तो वो आपने उससे बचना है। अपने आप को रेस्ट दें, ठीक है, लोगों का ख्याल, अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें, पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। उसमें कंप्यूटर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, देयर प्रिवेंशन एंड वेज टू कीप द इन्वायरमेंट हेल्दी। तो रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो हैं उनकी प्रिवेंशन और ये इन्वायरमेंटल और कीप द इन्वायरमेंट हेल्दी, तो इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्टक होंगे, चिड़चिड़े होंगे, उतने एब्यूजिव हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। सो ये बिब्लियोग्राफी मीन्स ये डिस्कवरिंग कंप्यूटर्स 2004 चैप्टर नंबर 11 में से ये वाली स्लाइड्स हैं ली गई हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, वायरसेस, एंटीवायरसेस, प्रिवेंशन और इस इकोनॉमिक के ऊपर था। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है? नो सर। चलें, वो क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया, बल्कि ऊपर हो गया है टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में जाएं आप लोग। तो ये मैं सर ये आपका सना डाटा शाहीन की